अक्षय कुमार जल्द नजर आने वाले हैं फिल्म कन्नप्पा में। इसी के साथ हो रहा है इसका टीजर लॉन्च, जिसमें नजर आए अक्षय कुमार, मधु शाह और कास्ट एंड क्रू। तो ये जो जर्नी है, जैसे आप पहली क्लास से 10वीं क्लास की यात्रा करते हैं, वैसे माइथोलॉजी से इसको इतिहास समझने की जो जर्नी है, उसके कारण ही लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा है। जैसे जो पहली क्लास में पढ़ रहे थे, जिनको पता था कि ये माइथोलॉजी है, अब वो धीरे धीरे डिस्कवर कर रहे हैं कि हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, हजारों एविडेंस हैं कि ये सब हुआ था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, सेलेस्टियल एविडेंस है, जिनको दुनिया में कोई झुठला नहीं सकता। और अच्छी बात है कि आज के समय में बहुत सारे लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। तो ये जो जर्नी है, लोगों का इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि उनको लग रहा है कि इसमें तथ्य है। ये सिर्फ थोड़े समय पहले तक लोगों को लगता है ऐसे कपोल कल्पना है कि ठीक है, राम थे, कृष्ण थे, नहीं थे। इवन कनप्पा के बारे में भी बहुत सारे लोग कहते हैं थे, नहीं थे। लेकिन कनप्पा का गांव है, जिसको एएसआई ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कि ये कनप्पा का गाँव है। तो ये सब हमारा हिस्ट्री है, जिसको माइथोलॉजी कह के दबाया गया। वो अब धीरे धीरे रिसर्फेस हो रहा है, इसलिए पॉपुलर हो रहा है। देखिए, विजुअल इसलिए इसका स्पेक्टेकल है कि हम दूसरी शताब्दी के आसपास की कहानी कह रहे हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास भारत कैसा रहा होगा, आप इमेजिन कीजिए। हमारी नदियाँ कैसी रही होंगी, हमारे झील कैसे रहे होंगे, हमारे जंगल कैसे रहे होंगे, हमारा लैंडस्केप कैसा रहा होगा। तो उसकी तलाश में विष्णु जी ने लगभग पूरी दुनिया घूमा, ये फाइनल करने से पहले। लेकिन जब वो न्यूजीलैंड गए, वो बताएंगे ज़्यादा कि उनका बहुत ही पसंदीदा प्लेस है और हमारा भी। और हमने देखा तो लगा कि ये यही जगह है जहाँ आप कहीं भी कैमरा रख दो तो आप बस वाओ, जैसे आप कह रहे हैं वैसे कोई भी वही कहेगा। हमारे डीओपी शैलन चाओ जो यहाँ नहीं है अभी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की और इसको अच्छा बनाने में ऑब्वियसली उनका कंट्रीब्यूशन है। तो ये वाओ फैक्टर तो आप देखेंगे। ये स्टोरी पहले 2015 में मेरे को आइडिया आया। समवन एल्स गेव मी द आइडिया एंड सिंस देन आई हैव बीन ट्रैवलिंग बिकॉज टू माउंट अप अ मूवी ऑफ दिस स्केल at that time, my market wasn't big enough. And in 2022, January, we were looking at making another film. And, even at that time, my market is not the scale of this movie. Definitely no. There's no shame in saying this Friday will definitely make my day. Wow. And when we started off with it, the whole idea was with my father. He was like, "You've been working on this film for quite some time. Go ahead, do it now." Maybe it's Lord Shiva's, made him say that. And then everything fell in place. And it's all Lord Shiva's blessing. Who am I? I just executed his order. That's all I feel like. April 25th, आप लोग Kannappa देखेगा. And remember this. For this generation, anybody who thinks of Lord Shiva, I hope and I'm confident it will be Mr. Akshay Kumar's picture which will come into our minds. And that's the kind of devotion we kind of made the movie in. And that's what he portrayed. मैंने पहले भी कहा था और मैं उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने कहावत सुनी थी हिंदी में कि बड़ा आदमी वही होता है जो अपने सामने किसी को छोटा महसूस नहीं होने देता। और जब मैंने अक्षय सर के साथ काम किया तो पूरी यूनिट के साथ जो उनका बिहेवियर था, वो मुझे वही कहावत याद आ गई कि सचमुच बड़ा आदमी वही होता है जो किसी को अपने सामने छोटा नहीं महसूस होने देता। आपने पूछा कि कितना मुश्किल था। मुझे लगता है कि हम सबको भगवान शिव ही पार लगा रहे थे और तभी इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े स्टार कास्ट के साथ, इतने बड़े कैनवस की फिल्म इतनी आसानी से पूरी हो गई कि हमें पता भी नहीं चला। और जैसा मधु जी ने कहा कि हमने बिल्कुल हंसते खेलते बिना किसी स्ट्रेस के इतने प्यार से, इतने अच्छे ढंग से बनाया कि ये सिर्फ भगवान शिव की ही ब्लेसिंग हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। ये उन्हीं के एक भक्त की कहानी है, तो वही पार लगा रहे हैं इसको। और हिस्टोरिकल तो ये कहानी है ही। मैंने बताया जैसा आपको कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुद रिकॉग्नाइज करता है कि ये कनप्पा का गांव है। तो कनप्पा एक हिस्टोरिकल फिगर है और हम इसको फोक टेल कहते हैं। श्री कालाहस्ती मंदिर है तिरुपति में, तिरुपति बालाजी आप सब जानते हैं। वहीं पे शिव जी के 5 मूलभूत लिंगम है, धरती, आकाश, अग्नि, वायु। इसमें ये वायु लिंगम है जो इस कहते हैं कि ये लिंगम जो है ये सांस लेता है। आज भी आप मंदिर जाएंगे तो 2 दिए रखे हुए हैं जो फड़कते हैं उनकी सांसों से। आप बिलीव करें ना करें, आप जाएं मंदिर, आप देख लें। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसको माइथोलॉजी पहले कहा जाता रहा है। अब मुझे लगता है कि अब सब आप लोग भी हिस्टोरिकल ही कहेंगे क्योंकि हमारे पास प्रमाण हैं इसके। डिफ़िकल्टी कुछ नहीं था क्योंकि
I'll tell you where we started off from. See, this movie was. I'm going to give a little brief history lesson, so I'm sorry. It's going to take 3-4 minutes. See, Kanappa is not a known story for all the people here. I believe the story took place in the 2nd century. The first reference on Kannappa, Adiguru Shankaracharya, while writing the Shiva Purana, made a reference that an Adivasi offered meat to Lord Shiva. That was the first reference of Kannappa. And Kannappa's story was written from there. In Sri Salem, when the Sri Chakra is written, even there, even today, when you go to one of the Jyotirlingas in Hyderabad, near Hyderabad, Sri Salem, it is written there. Long before that, the Vayulinga is there. That's the only linga which is, the base is in the shape of a spider, the sides are of elephant tusks, and on the top is a snake. This is the shape of Vayulinga. Kannappa is a devotee of Shiva in that area. And after 8th century, in the 14th century, one of the greatest kings of India, Sri Krishna Devaraya, in his kingdom, there was this very famous poet called Durjati. Durjati wrote poems on Sri Kalahasti Ishvara Mahatyam, which means all the miracles of Sri Kalahasti Ishvara, this temple where the Vayulinga is Sri Kalahasti. And those poems, they were written in these, in Telugu they call it Tatipa Gandralu, means in the palm leaves. I don't know what they call in Hindi. Tadpatra, almost the same. They were lost, and then in the 18th century, there was this English collector called Mr. C.P. Brown, who collected all these and then translated them with scholars into English, and the book was published in 1895. And there are 5 books today which are still in preservation. One of them is in Bikaner Museum. Based on that book, in 1938, a silent film was made called Kannappa Nayanar. And then in 1953, one of the greatest Indian actors, legendary Dr. Rajkumar sir in Kannada, made his arangetram in films through this movie called Bedar Kannappa in Kannada. And he acted simultaneously in Telugu. In Telugu, it was called Sri Kalahasti Ishvara Mahatyam. The same production company from Chennai made the movie in Hindi called Shiva Bhakt in 1954. And then Bedar Kannappa was again remade in 1976 by legendary directors Mr. Bapu and Ramana with another great Telugu actor, Mr. Krishnam Raju, who happens to be the uncle of Prabhas. And then again, Mr. Rajkumar made that movie in Kannada in 1988, where he played the role of Lord Shiva, and his son, Shivaraj Kumar sir, played Kannappa. And then after 50 years, I believe in Telugu, when we first started, Lord Shiva gave me the permission to tell this generation the story of Kannappa. And when I was writing Kannappa, see, the last 30 minutes is the same. An atheist becomes God's devotee and God decides to test him. And, it's a known legend that, the linga, blood starts coming from the linga, and Kannappa takes his eye out and gives it to Lord Shiva. This is a single pager. For me, it's a half pager. Now, who was Kannappa? What was he? Why was he an atheist? For me, it was an open canvas. For me, the canvas was large. And I'm a huge fan of Lord of the Rings. Watch the movies. I know the dialogues, scene by scene. So for me, I wanted to create my world. And I felt that this is what Kannappa was. This is who he was. This is why he was an atheist. And his love to Lord Shiva. Why is he in love with Lord Shiva towards the end? And why did Lord Shiva actually test him? And what was the relationship between the god and the devotee? And how pure should the devotion mean? See, one thing which I have common with Mr. Akshay Kumar and me is that our devotion to God knows no boundaries and no rituals. It's what we feel in the heart is what we do, is what God accepts. इसका उत्तर तो जो पुराने लोग हैं कि क्यों नहीं बनी फिल्में, वो ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं कि पिछले 20-25 सालों में एक समय था कि हमारे यहाँ नल दमयंती, शकुंतला, राम राज्य जैसी फिल्में बना करती थी, लेकिन 70s और
के बाद एक जय संतोषी माँ बनी थी मेरे ख्याल से 73 में या 75 में। उसके बाद मुझे नहीं याद आता कि कोई भी भक्ति वाली फिल्म हमारे यहाँ बनी है। ये क्यों नहीं बनी है, इसका जवाब तो जो पुराने प्रोड्यूसर्स हैं या एक्टर्स हैं वो दे सकते हैं। मैं तो अभी हमने टेलीविज़न में काम किया है, तो टेलीविज़न में तो बहुत बन रहे हैं पिछले कुछ सालों से, लेकिन दक्षिण के लोग जो एक रूट है उससे शुरू से जुड़े रहे हैं और ये एक बहुत कभी टूटा नहीं है। वहाँ कंटिन्यू कोई ना कोई फिल्म बनती रहती है, हमारे पौराणिक आख्यानों पे, हमारे हिस्टोरिकल तथ्यों पे। तो वो परंपरा उन्होंने बनाए रखी, उन्होंने तोड़ा नहीं। और एक जो आप साउथ की बात कर रही है, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम लोग मुंबई में नॉर्मली एक जो फ़र्क जो मैं बताना चाहूँगा कि मुंबई में नॉर्मली हम लोग कितने भी सीनियर एक्टर हम लोग नाम लेकर पुकारते हैं। जैसे आपने कहा अक्षय, अमिताभ, हम लोग भी धर्मेंद्र, सब नाम लेके बुलाते थे। दक्षिण में आने के बाद मैं अब दोबारा शायद ये कभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ जितने भी सीनियर हैं तेलुगु में उनको गारू कह के बुलाएंगे, आपके पैरेलल भी हैं, या उनको अगर तमिल है या कन्नड़ के हैं या मलयालम है तो उनको या तो अन्ना कहेंगे या सर कहेंगे। तो ये जो रिस्पेक्ट का लेवल है वो एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। तो मतलब मैंने तो ये मेरे लिए एक सीखने का अवसर था और मैंने सीखा। Thank you. The first question about the Jyotirlingas, I took up the Holy Trail, finished 5. The other 3, hopefully before April 25th, I get to finish the remaining 7 also. And right now, I think I am doing a Hindi film, Kanappa. So I think that answers the second question of yours. You know, when we came to know about the controversy, what that Mr. Akshay, what the song was a fantastic song. See, in the movie Kannappa, Kannappa hugs Lord Shiva's linga, and when you go to the temple, he offered meat to Lord Shiva, and towards there's a very big portrait in the temple. When you go into the town of Srikalahasti, you see that the foot of Kannappa on Lord Shiva. Okay, and he's taking the second out. But the reason why he puts the foot there is there. And the way he worships, the lyrical video of this movie is out. The way he worships Lord Shiva is he pours water in his mouth and he spits it out on Lord Shiva to clean it. As long as your heart is pure and your devotion is pure, the rituals are not necessary, is what the movie tells. And there's the same thing, when you look at it, I felt divine when he was hugging it. I felt connected. Markandeya, who's one of the Sapta Chiranjeevi, when his time was up and when the Yamadutas came to take him out, he went and hugged the Vayulinga. And when Lord Yamaraj came down to take him, he couldn't do it. He said, I don't have the power because he's hugging the linga. So he's one of the Sapta Chiranjeevi. When you go back to history, when you do that, it's, all these do not really matter. These, if you want, with due respect to the priest association, I don't know, them very personally, but the way we worship is that very pure. And how did I, as a kid, see my mom and dad, in their 30s, late 30s, early 40s, how were they? Were they cute? For me, the banter between the mother and father was always cute. And that's how I look at Lord Shiva and Parvati. And that's the banter I be put in the movie also. And like he said, as long as we take them purely as a mother and father, I think there's no mistake in the way we worship them.